हेलो एवरीवन। तो मैं ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था एंड आई सॉ दिस पोस्ट। तो आपने क्लॉड कोड का नाम सुना होगा या जेमिनाई सीएलआई का नाम सुना होगा। सो दिस इज़ बेसिकली एम्पियर कोड एंड ये काफ़ी सिमिलर है एंड द कैच इज़ दैट इट इज़ फ्री टू यूज़। तो अभी मैं इनकी पोस्ट देख रहा था विच वॉज कि ये $10 के क्रेडिट्स हर दिन हमको दे रहे हैं विच वी कैन रिडीम on models like Claude Opus 4.5. तो I thought कि let's give it a try and document this process. And ऐसी बहुत सारे टूल्स हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं उनको भी कवर करूं तो let me know and we'll also cover them. For now, let's try installing this. So this is basically the website of this. Let me switch. Yes, so this is the website of M Code, and let me just go to the install thing. एंड इट इज़ अवेलेबल एज एन वी एस कोड एक्सटेंशन। आप इसको कर्सर में भी यूज़ कर सकते हो सिमिलरली, बट आई एम गोइंग टू ट्राई दिस सी एल आई वर्जन बिकॉज आई लाइक इट इन सी एल आई। तो लेट्स इंस्टॉल दिस। लेट मी शेयर माई टर्मिनल स्क्रीन विद यू गाइस। यस, बाय द वे आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इट बट फॉर सेक ऑफ रिकॉर्डिंग आई एम इंस्टॉलिंग इट अगेन। और अभी ये डाउनलोड हो रहा है, लेट इट गेट डाउनलोडेड। Yes, it is now installed in our system and let's see. तो मैं यहाँ पर ए एम पी लिखूँगा एंड व्हेन यू विल डू इट फॉर द फर्स्ट टाइम इट विल आस्क यू टू लॉग इन। तो आपको सिंपल उसको एंटर करके लॉग इन कर देना है अपने सेम ब्राउज़र से आप जिससे आपने पहले लॉग इन किया होगा, राइट। एंड इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू बिल्ड समथिंग विद दिस। ओके, बिफोर वी कंटिन्यू लेट मी टेल यू वन मोर सेटिंग दैट अगर आपको ये यूज़ करना है तो यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखेगा लाइक दिस इनेबल एम्प फ्री। सो आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा, तब आपको ये $10 के क्रेडिट्स यूज़ कर पाएंगे। एंड व्हाट हैपन्स इज, सॉरी एक्चुअली मेरी स्क्रीन शेयरिंग में वो दिखा नहीं, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ। यस, सो दिस दिस सेटिंग कॉल एम्प फ्री। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल्ड होगी, आपको ये इनेबल करनी है, देन आप इसके जो बैलेंस है इसको यूज़ कर पाओगे। ओके, एंड नाउ लेट्स मूव बैक टू दिस टर्मिनल। ओके, तो मैंने अभी ये ओपन कर लिए हैं पैरेलल में एंड नाउ विल मेक समथिंग आउट ऑफ दिस। सो लेट्स एक और चीज़, अगर आप इसमें कंट्रोल एस दबाएंगे तो इस तरीके से हम इसमें मोड स्विच कर सकते हैं, स्मार्ट एंड रश। सो स्मार्ट इज़ बेसिकली द हाई फ्रंटियर मॉडल्स लाइक जेमिनाई 3 एंड क्लोड ओपस 4.5 एंड रश इज़ बेसिकली हाइकू 4.5 मॉडल जो काफ़ी इजी बेसिक टास्क के लिए होता है, लाइक डीबगिंग, ओ सॉरी लाइक क्विक फिक्सेस जैसे कलर चेंजेस वगैरह। फाइन, तो let's move to some folder. Let me open up a folder and let me open it here. Okay, we'll first ask it to create something very simple. Okay, let's ask it to create a uh, to do app, but for but as the style. Oh, sorry, let's try something different. Let's but with Kanban. Let's try this. Use HTML and CSS for now. HTML, CSS, and JS, and let's see how this performs. And as I'm seeing that it has created some sort of to-dos. Okay, and सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि it is going to the point to the task, मतलब ये फालतू की बातें नहीं कर रहा है, instead perform कर रहा है actions को, which is quite good thing because
जब आप खुद की एपीआई टोकन्स यूज़ कर रहे होते हैं तो फिर ये काफ़ी अच्छा रहता है, एंड इससे स्पीड भी इम्प्रूव हो रही होती है। सो या and let's finish it up quickly. Okay, it's saying that इसने बना दिया है, इसने एक साउंड भी इसमें आई, and let's see कि ये क्या बना है। ओके, डॉलर प्रेस करके मैं शेल मोड में आ चुका हूँ। यहाँ से मैं इसको रन कर दूंगा। लेट्स रन 1x सर्व। तो ये मेरे किसी पोर्ट पर रन हो जाएगी, आई गेस। यस, लेट्स ओपन इट हियर। लेट्स ओपन इट। ओके, दिस इज समथिंग विच इज इट हैज मेड। इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। लेट्स शो यू गाइस। यस, दिस इज इट, a sample. Okay, okay, it is working quite easily. Okay, now let's use the rush mode, and I'll press escape to basically get out of the shell mode. Yes, now I'll basically do control S to switch. There is something wrong. Yes, I have to switch. Mhm. Okay, so these are some of the options which I get. It has support for MCPs also, and I'm trying to find basically how to switch the mode. Okay, तो ये control S ही बता रहा है, and still I'm not able to change the mode. Okay, let's ask it to make this thing look brutal, neo brutal, black, dark mode. Okay, let's see कि ये कितना जल्दी इसको कर पाता है. Okay, you guys were not able to see this thing. Let me arrange the screens. Okay, so it is indeed making some changes, and let me open one in another window. Yes, so it has made the changes. Okay, now it looks way better. It looks way better. Make a split-wise clone. Let's see कि ये इसको कितनी देर में बना पाता है. And again, it basically more or less depends on the quality of model also. The tool indeed matters, but overall it has nice experience of coding. और जहाँ पर हमको काफ़ी पैसे देने पड़ते हैं for Claude code, it is free to use, so that's a very plus point for this one. So yeah, it is a great thing to use. And I'm still not able to figure out कि इसको फ्री कैसे कर पा रहे हैं, because yes, I see an ad here, but इससे मुझे उतने ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस ad से.
So it is making something. Let me just stop this server and okay, let's run it again. और अभी इसको बना रहा है. Let me just pause the recording and I'll come once it's done. One more thing to see is कि अब हम इसको स्मार्ट मोड में यूज़ कर रहे हैं, मतलब हाई मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं, एंड स्टिल हमने काफ़ी चीज़ इससे कर लिए हैं, फिर भी हमने $0.52 ही यूज़ किए हैं, राइट. एंड अगर हम इसको रश मोड में यूज़ करेंगे फॉर बेसिक स्मॉल टास्क तो आई थिंक कि मोर और लेस सारे टास्क आपके एक दिन के हो जाएंगे इससे. So I'll basically use this in my while coding. So I generally don't use or prefer using too much AI while coding, but yes, इतने help चलती है. So yes, it would be a helpful tool. और मुझे इसके लिए कोई बेसिक टूल भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है फिर. So yes, let's see किसने कैसा बनाया है. Okay, so इसने again neo brutalism ही follow किया है, adhering to the previous instructions. So this is it. अगर मैं इसको बोलूँ कि use glass, liquid glass y instead in this one, तो let's see कि कितनी देर में इसको चेंज कर पाएगा. And while it's doing it, I'll keep using it. Okay. Okay, it is working. Okay, this is working fine. Considering the time it took, this is quite nice thing. और अगर मैं इसको बोल दूँ make $1 into INR, we are in India. Okay, so मैं इसमें पैरेलली भी भेज सकता हूँ, लाइक ये पुराना वाला स्प्लिट रोक देगा. एंड इसने लोकल स्टोरेज भी लगाया हुआ है, तो यस, इट इज़ वर्किंग. एंड इट्स ऑल्सो क्वाइट easy to use also, like if I zoom it out, let me just do this. Yes, yes, it's quite usable. ओके, मैं इन पे क्लिक भी कर सकता हूँ. नाइस. एंड मैं स्लैश करके इन चीज़ों पर भी आ सकता हूँ. एंड आई कैन स्विच मल्टीपल थ्रेड्स ऑल्सो. मैं पैरेलल में भी कोडिंग करवा सकता हूँ. सो यस, इसके डॉक्स को देखना वर्थ इट होगा. मैं इसमें इमेज भी पेस्ट कर सकता हूँ. यस, ग्रेट. इसने कुछ चेंजेस किए हैं, लेट्स सी. ओके, इट हैज़ एडेड ग्लासमॉर्फिज्म. लेट्स सी कि ये रुपीज़ में इसको ले पाएगा या नहीं. Add functionality to modify the transactions. Okay, रुपीज़ में आ चुका है यहाँ पर सब कुछ.
एक्टिविटी में ये अभी भी डॉलर में है, आई डोंट नो व्हाई. So we have used $1.5 of credits until now. So if you see, हमको लगभग $300 के अराउंड क्रेडिट्स फ्री मिल रहे हैं, विच इज़ an amazing thing and mind boggling at the same time. ये भी फिक्स हो चुका है. So yes, overall it's a great tool. And yeah, let's I'll see you in the next one. I hope you enjoyed this video, and please like this video and subscribe this channel, whatever the drill is. And yeah, I'll see you in the next one.